The first topic at hand is Amendment to Indian Forest Act 1927. I hope it is visible. Amendments to Indian Forest Act 1927. Now very important thing is कि forest का definition नहीं है. The act is about the forests, but forests का definition किसी भी act में properly नहीं है. The second very important thing is कि there is also a case on that. There is a case where Supreme Court referred in 1996 कि what should be the definition of forests. There is a circular also, central government का एक circular भी है, जहाँ पे the government has asked all the state departments to formulate the definition of forest by themselves. मतलब states are independent, or states can choose independently the definition of a forest. So we are studying the very important point, Indian Forest Act 1927. This is the landmark act for the forest governance in India. Now we will try to understand in a bit what is the whole forest governance in India and how has the evolution of the forest governance in India taken place. Fine. So we can classify the whole evolution of governance of forest in India into three phases. The first one is colonial. Okay, colonial phase. Okay, colonial from 1864 to 1927. ठीक है, colonial British. ठीक है. The second we can call is conservative. ठीक है, कंजर्वेटिव फेज वो फेज है जहां फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बाद से, ओके, फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बाद से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 तक, 1927 टू 2006. ठीक है. एंड नाउ द थर्ड इज rights based forest governance. Now what are these three? We are going to delve into it. What are these three and how has the evolution of these three laws impacted the whole economy, socio-economy of forest governance in India. ठीक है. Colonial is 1864 से 1927. 1865 में पहला फॉरेस्ट एक्ट आया. That forest act and till 1927 the main aim of the laws was not to conserve the forest. ठीक है. The main aim of the laws was not to conserve forest but to protect the revenue that forest is generating. ठीक है. So what was the main implication of colonial policy was alienation. Okay, alienation of rights. Okay, alienation of rights. That means the people who were living in the tribal areas or the jungles, they were deprived of their traditional and customary rights. कैसे? Forest Act 1927 has declared the forest into three categories: reserve forest, village forest and protected forest. और उससे भी important, very important thing कि 1927 Forest Act says that all the forest belongs to government. Prior to that, what happened was in Mughal times and prior to that, the people who were living in the forest owned these forest resources. Okay, although all the land did belong to the king, but the governance or the rule of the king in the forest was not very strong. Okay, the people living in these forests had customary rights over the forest produce, and they not only lived in the forest, they conserved the forest as well. But the colonial policy of forest preservation and conservation was in the garb of conserving the forest, a method, a tool to alienate people from the rights over the forests. कैसे? सबसे पहले तो डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट का रिसोर्स है. गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट, एनी फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है. You would have studied in your history lessons about the Santhals and the other tribal revolutions. ठीक है. One of the very important reasons for the tribal revolutions was alienation from the land, alienation from the forests, because these tribal peoples depended very heavily upon the forest for their livelihood. Still, there are many communities which depend very heavily upon the forest for their livelihood. Now, the Forest Act 1927 also declares that once the state government will appoint a forest officer, that officer will
determine the existence, the nature, and the type of the rights that people have in the forest. After the right have been decided, no further right can be accrued on to the people. Sorry, मतलब कि अगर फॉरेस्ट ऑफिसर ने डिसाइड कर दिया कि इस विलेज कम्युनिटी के लोग जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो इतनी ही लैंड पे खेती कर सकते हैं, आफ्टर दैट नो एक्रूअल ऑफ फॉरेस्ट राइट्स कैन बी डन. मतलब इसके बाद एक्रूअल ऑफ फॉरेस्ट राइट मतलब दीज पीपल कैन नॉट क्लीन देयर फॉरेस्ट, ठीक है, एंड स्टार्ट एग्रीकल्चर इन दैट. Okay, whereas Jeremy Bentham and John Stuart Mill, the two very important libertarians, they said that the land belongs to one who plows it. Okay, the land belongs to one who plows it. The fundamental of liberalism that these Bentham and Mill have taken the stand for the colonization of America, of course, they said that the one who plows the land, the one who sows on it, the land belongs to that. But the similar was not in the case with India. Okay, now colonial policy 1927 की जो थी, that alienation of land, we'll be dealing with the details of कि 1927 का एक्ट क्या था, क्योंकि हम उसी का अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं. फिर 1927 से 2006 इसमें जो लॉज आए, आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री में बहुत सारा ये स्टार्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्व करो, फॉरेस्ट कंजर्व करो. बट फॉरेस्ट कंजर्व करने में it was determined by the forest conservationists. There are two basic conflicts. There are two people. The first one are conservationists, the people who want to conserve the forest, and the people who are fighting for the rights of the people, indigenous people living in the forests. So conservation versus rights. One important thing that the people who are conservationists fail to believe, fail to understand, is that people living in the forests are not outsiders. They are integral part of the forest itself. वो forest ecosystem का एक integral हिस्सा बन चुके हैं for the fact that they have been living in the forest for millions of years now. Their whole civilization has evolved in the forests. Their livelihood depends on the forest produce like honey, wax and all these things. बहुत primitive societies forest में रहती हैं, tribal groups. Many societies don't even practice agriculture, or they practice very primitive agriculture, है ना. तो the main source of their livelihood is either cattle or the forest, ठीक है. तो conservationist इस period में conservationist approach आया. Conservationist approach ये था कि the people should be evicted from the forests because the people have degraded the forests. Okay, they said that the people have degraded the forests. तो Wildlife Protection Act 1972, Air Conservation Act, Water Pollution Act, Forest Conservation Act 1980, then Environment Protection 1986, then Rio Summit and all these things happened. तो यहाँ पे है conservationist approach में क्या है कि they argue that the people living in the forests have degraded the forest and that is why they should be put out of the protected areas. अब यहाँ पे concept आया protected areas का, ठीक है, like Wildlife Protection Act 1972, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट था कि अब अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हो जाएगा तो वहां पे द राइट्स ऑफ द पीपल विल बी नलिफाइड एंड दे विल हैव टू रीलोकेटेड टू सम अदर प्लेस. ये कंसेप्ट था कि जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं दे विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नेचुरल रिसोर्सेज like wildlife, like plants, and they will degrade the wildlife and the plants, and that is why they need to be relocated out of that forest. Okay, तो इसलिए आया वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अदर सिमिलर एक्ट्स. और इन एक्ट्स का मेन एम था कि नेचर को कंजर्व करना विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द राइट्स ऑफ पीपल लिविंग विद इन द फॉरेस्ट्स. लेकिन उसके बाद आया राइट्स बेस्ड अप्रोच आफ्टर द PESA, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एक्ट 1996. Now what is Panchayat Extension of Schedule Act? After the 73rd and 74th Amendment Acts of 1992 हुआ क्या कि पूरी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशनल, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन आया फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लोकल गवर्नेंस, द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. उसको एक्सटेंड किया. द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज वर एक्सटेंडेड टू द शेड्यूल एरियाज. शेड्यूल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ठीक है. तो अब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज हैं बेसिकली, या फॉरेस्ट में जो शेड्यूल एरियाज हैं वो.
अब क्या हुआ कि 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये क्या है, लोकल गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, लोकल गवर्नेंस. लोकल गवर्नेंस मीन्स पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. नाउ व्हाट हैपेंड वाज द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज वर एक्सटेंडेड टू शेड्यूल एरिया. शेड्यूल एरियाज मतलब वो एरिया जो कि 5th और 6th शेड्यूल में है. अंडरस्टूड. 5th और 6th शेड्यूल में कौन से एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज, जो जंगल वाले एरियाज हैं, ठीक है, उन एरियाज में पंचायती लॉ को एक्सटेंड करने को ही पीईएसए 1996 कहते हैं. अब देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड. व्हाट हैपेंड वाज कि विद द एक्सटेंशन ऑफ पीईएसए 1996 टू द फॉरेस्ट एरियाज, बेसिकली शेड्यूल एरियाज की बजाय फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि शेड्यूल एरियाज आर बेसिकली द ट्राइबल एरियाज और द फॉरेस्ट एरियाज. तो हुआ ये कि व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द पीईएसए या पंचायत पीईएसए 1996 एक्सटेंडेड टू द एरियाज ऑफ जंगल्स एंड फॉरेस्ट्स, ठीक है, तो व्हाट हैपेंड वाज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द गवर्नेंस ऑफ फॉरेस्ट वाज ट्रांसफर्ड टू द ग्राम सभास या ग्राम पंचायत. Okay. Now Gram Sabhas were very empowered to decide as to what kind of industry you can set up in a forest, what kind of rights the people will have. इससे पहले the Forest Act 1927 के अंदर forest officer will decide the rights of the people living within the forest. ठीक है. अब क्या हुआ कि the Gram Sabhas will decide कि individual rights as well as community rights. इंडिविजुअल राइट्स का मतलब अगर किसी एक बंदे के फार्मिंग राइट्स हैं वो इंडिविजुअल राइट्स हैं. कम्युनिटी राइट्स का मतलब एक विलेज पूरी कम्युनिटी है, अगर ये पूरी कम्युनिटी किसी फॉरेस्ट का यूज करती है अपने फायरवुड कलेक्शन के लिए, वैक्स कलेक्शन के लिए, हनी कलेक्शन के लिए, तो उन राइट्स के बारे में कोई डिसीजन लेना होगा तो ग्राम सभा लेगी. दैट मीन्स द गवर्नेंस ऑफ फॉरेस्ट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर टू द local people. That was a very like watershed moment in the governance of the forests. अब क्या हुआ इसके बाद, but very important thing was कि the Forest Act 1927 still existed, okay, and the states have the power within the Forest Act 1927 to make laws for the governance of the forest, okay. तो states अपने laws बना रहे थे कि जो कि PESA 1996 के conflict में थे, okay. अब इसको रिमूव करने के लिए फिर आया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. इसके बाद आया क्या, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. नाउ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाज द मोस्ट democratic, okay, act that we have in the country in the respect of forest governance. Because Forest Right Act 2006 grants the powers again to the Gram Sabha from the forest officer, ठीक है. the rights of minor mining and ये सारे rights किसको मिल गए, ग्राम सभा को. Now ग्राम सभा will decide कि किस प्रकार की इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है जंगल में, डाइवर्जन ऑफ लैंड अगर हो रहा है फॉरेस्ट लैंड का तो वो किस तरीके से, मतलब वो उसके बारे में डिसीजन लेना ग्राम सभा के पास राइट्स है, ठीक है. फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉरेस्ट गवर्नेंस में, कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का अगर कोई जेनेटिक रिसोर्स फॉरेस्ट का है उसको यूज कर रहा है, कोई भी कंपनी यूज कर रही है, तो उसको उस कंपनी को रॉयल्टी पे करनी होगी उस कम्युनिटी को जिस कम्युनिटी के पास उस फॉरेस्ट का कस्टमरी राइट है. तो ये सारे राइट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सारे लॉज इसलिए इंपॉर्टेंट हैं. दीज आर द लॉज दैट ट्रांसफर द पावर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस फ्रॉम द स्टेट टू द पीपल, ओके. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ओके. नाउ I hope you understood. We are going to back to our topic. Government of India has invited an expression of interest from law firms for amending the Indian Forest Act 1927. ठीक है. पहले भी 2017 में similar provision was brought जहाँ पे ड्राफ्ट लॉ भी प्रिपेयर किया गया था, बट दैट ड्राफ्ट फेस्ड वेरी ह्यूज मतलब ऑपोजिशन फ्रॉम द सिविल सोसाइटीज एंड ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है. तो दैट वाज ड्रॉप्ड एट दैट टाइम. नाउ अगेन
an expression of interest has been brought by the government and the government is seeking opinion from the law firms. जो इंडिया में इंपॉर्टेंट लॉ फॉर्म्स हैं उनसे ओपिनियन ले रही है गवर्नमेंट as to how the forest law can be amended. Forest Act, Indian Forest Act can be 1927 can be amendment. अब इसमें proposals क्या हैं कि how is the government trying to amend the laws? Major provisions are, as I already told, कि decriminalization of relatively minor violations of law. Decriminalization of relatively minor violations of law, expeditious resolution of cases by compounding the offences. ठीक है, उसके बाद जो बहुत सारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बना के और फास्टर रिजोल्यूशन के लिए उनको बनाना. ठीक है, जैसे अर्लियर जो लॉज थे, जो स्ट्रिक्ट लॉज थे, जो कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे, उनको भी कंपाउंडेबल ऑफेंस बना के क्या करना कि सो दैट द टाइम ऑफ लिटिगेशन गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है. थर्ड इज रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टीज. अगर पेनल्टीज कहीं बहुत थोड़ी लग रही थी, क्योंकि द एक्ट इज 94 ईयर्स ओल्ड. ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि अब बहुत सारा बदलाव भी आ गया है, तो पेनल्टीज को रैशनलाइज करना, जैसे 100 रुपीज की पेनल्टी है तो अब उसको 1000 रुपीज करना, ये इसको रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टी कहते हैं. प्रिवेंटिंग द हरासमेंट ऑफ सिटीजन्स. ओके, प्रिवेंटिंग द हरासमेंट ऑफ सिटीजन्स. अब in the name of preventing the harassment of citizens, of course the government is trying to push corporate interest into the government, into the forest. De-clogging of criminal justice system, promoting public and private partnership for, now very important thing is ease of doing business. अब ease of doing business को government push कर रही है the forest also. Ease of doing business means, of course the corporates will now be able to access the resources of the forest with greater ease. ठीक है, and that is why there has been a strong opposition for the this proposed amendment in 2017 as well, and now as well people are opposing, people are trying to oppose in the civil societies. ठीक है, so these are some proposed amendments. Now IFA 1927, IFA 1927 को amend करना है तो IFA को समझना बहुत जरूरी है. The first IFA classifies forest into three parts. The first one is reserve forest, second protected forest and village forest. Reserve forest में state government can declare any forest land or wasteland where it has ownership as reserve forest. And once a forest is declared as a reserve forest, all the rights of citizens are abolished within the forest. मतलब any kind of activity that has to take into the forest must be authorized by the forest department of the state. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है या यूनियन लिस्ट में है. द फॉरेस्ट इज अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, अर्लियर इट वाज इन यूनियन लिस्ट. ओके, एंड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इट वाज ब्रॉट इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, एंड सब्सिक्वेंटली इट हैज रिमेन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. दैट इज both state government and the union government has power to legislate upon the laws that under the IFA. ठीक है, and there are certain provisions जहाँ पे states अपने amendments खुद ला सकते हैं. The one is declaration of the forest. अब state government के पास power है कि वो किसी भी forest को, किसी भी area को reserve forest declare कर सकती है. अगर वो एरिया रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया तो उस एरिया के अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब है एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट. ओके, कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. स्टेट कैन एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर some of the resources like fruit, timber and all these things. Now why is state government so, why does the state government, why does the government has so many rights over the forest? Because forests are very important, the source of natural resources. From soap to clothes, everything comes from directly or indirectly from the forests or agriculture. Okay, so to control that, like timber is one of the major source of revenue. ठीक है, तो टिम्बर मतलब लकड़ी, जो जंगल की लकड़ी उसको टिम्बर कहते हैं, जिससे सोफा फर्नीचर बनता है. तो टिम्बर के ऊपर अगर गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग सम लेवी, ठीक है,
तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा उसमें से, एंड इट विल ऑल्सो डिसइंसेंटिवाइज द felling of the trees and hence the trees can be conserved. Now village forest, government can grant the rights. अगर किसी village community के पास कोई forest है तो government has the right to declare that this is a village forest and the village community will have the community rights over the forest. Okay, उस केस में आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. तो ये तो हो गया तीन प्रकार के फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन विद इन द IFA 1927. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ IFA 1927 इज कि अब इन फॉरेस्ट में व्हाट आर द काइंड ऑफ राइट्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज ड्वेलिंग राइट. ड्वेलिंग का मतलब रहना, कि हु कैन लिव विद इन द फॉरेस्ट. तो पहला राइट है ड्वेलिंग राइट, दूसरा राइट है ग्रेजिंग राइट एंड राइट ऑफ कल्टिवेशन. These are the three kind of rights that IFA 1927 recognizes. Right of dwelling का मतलब क्या हुआ? Right of ownership to the traditional dwellers of the forest. The people who have been traditionally living within the forests have a right of dwelling. मतलब they can live within the forest if they have been traditionally living within the forests. Others who are not traditional dwellers of the forest don't have the right of dwelling within the forest land. Understood? The second right is grazing right. अब very important thing is कि forest communities में not only forest dwellers या permanent settlers of the forest, but many people within the forests do not settle at a place. They are nomadic and pastoral. ठीक है, like the Gaddi tribe of Himachal. Okay, या Gujarwals of the lower Jammu region. These people are tribals. Okay, and they are pastoral in nature. They have pastures, they have their whole flock of sheep and everything, and they move from one place to other in the search of grasslands. ठीक है, तो these people should have also the right of grazing within the forest also. तो right of pasture to pastoralist मतलब the people who are not pastoralists do not have the grazing rights in the forests. And the third one is right of cultivation. अब right of cultivation का मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के जो राइट्स हैं वो किसको होंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई हैव मेंशन्ड हियर द राइट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन टू ट्राइबल ग्रुप्स. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब झूम कल्टीवेशन एज इज अंडरस्टूड इन नॉर्थ ईस्ट. ओके, तो जैसे अब झूम कल्टीवेशन इज वन ऑफ मैनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वन ऑफ द मैनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन दैट टेक प्लेस इन इंडिया. ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज विच आर लिविंग विद इन द फॉरेस्ट, ओके, वो क्या करते हैं, वो they burn the forest and they use the land for 2-3 years and they again burn some other forest and use the land for 2-3 years for cultivation of crops. तो उनको ट्रेडिशनल राइट्स ग्रांट किए जाएंगे जो कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं. एनीवन हु इज नॉट वन सच ट्राइबल ग्रुप दैट हैज डिपेंडेड ऑन दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो अगर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था तो उसके राइट्स नहीं होंगे वहां पे. ओके, so there are three kind of rights. The first one is right to dwelling, second is grazing right, and the right of cultivation. Forest has not been defined under law. Definition of forest अगर हम बात करें तो forest has not been defined under law. States are independent to choose any definition for forest within their own premises, of course. And the third very important point is Supreme Court in 1996 in its judgment in T.N. Govardhanam versus Union of India, the Supreme Court interpreted that the word forest will have the dictionary meaning. जो डिक्शनरी में मीनिंग है फॉरेस्ट का वही फॉरेस्ट की डेफिनेशन होगी. ओके, what are the major drawbacks of course the Forest Act 1927? The major drawbacks were that it was enacted not to conserve, as I said in the very starting, it was enacted not to conserve the forest but to increase the profits from the forest फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, अब वो प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज हो सकते थे? बाय रेगुलेटिंग द टिम्बर. रेगुलेटिंग द टिम्बर मीन्स टिम्बर मतलब अगर पहले क्या था, लोग जंगल में से लकड़ी काट के ले आते थे और बाहर उसका सामान बना के फर्नीचर और ये सब बेचते थे. उस पर किसी को टैक्स नहीं देना होता था, अगर देना भी होता था दैट वाज वेरी माइनर. ठीक है, बट आफ्टर द डिक्लेरेशन of British government under the IFA 1927 and Forest Act 1864 that all the forest belongs to the government. ओके, तो जो राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स ऑफ पीपल हैं ओवर देयर फॉरेस्ट एंड द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट, दे वैनिश्ड
ओके अब क्या होगा, अगर तुम्हें, अगर इफ यू हैव टू use the resources of the forest, you will have to go to the government and take a permission for that. That means, and the government will impose some kind of levy, some kind of tax on you to give you permission, and that becomes the earning, the source of revenue for the government, and that is why these acts were brought. ठीक है, because the regulation, so that lesser number of people will go to forest and use the forest resource, and the British can of course, जब property है British government की है, तो British can of course use the forest as per their own use. ठीक है, on revenue for what, these were basically aims of the British government to implement the IFA 1927. This denied the rights of the people in forests. Okay, forests were declared the property of the government. और जब आप फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर देते हो प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो नेचुरल राइट्स और ट्रेडिशनल और कस्टमरी राइट्स ऑफ पीपल हैं, दे बिकम सब्जेक्ट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब दे बिकम सब्जेक्ट टू द लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट उसके बारे में कोई चेंज कर देगी लॉ में, तो वो उसके राइट्स जो एसोसिएटेड है वो भी चेंज हो जाएंगे. दैट इज वाई फॉरेस्ट को जब गवर्नमेंट ने IFA 1927 में डिक्लेयर कर दिया एज अ गवर्नमेंट रिसोर्स, as the property of the government, the traditional and customary rights of people were abolished. They were subject to the legislative action of the government. Now, the new amendment. The new amendment seeks the dilution of the laws, makes the corporate entry easier, of course. जहाँ भी ease of doing business है, that means ease of doing business for the corporates. ठीक है. The rights of tribals and other forest dwellers. Okay. The role of Gram Sabha. Earlier laws enacted in 2017, okay, the draft proposal that the government prepared in 2017, okay, made the forest officer very powerful vis-a-vis the people of the forest. Like 2017 में जो draft आया था, वहाँ पे एक provision ये भी था कि forest officer can shoot anyone without even giving any warning if they think that the person is poaching. Okay, तो such kind of laws were there. तो यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है, एज आई टोल्ड, कि कंजर्वेशनिस्ट के बीच में और द पीपल विद द राइट्स ग्रुप्स. द राइट्स ग्रुप्स मतलब पीपल हु हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, एंड द कंजर्वेशनिस्ट मतलब द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इटसेल्फ. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज द मैंडेट ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट, एंड द राइट्स ग्रुप, द सिविल सोसाइटीज आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग विद इन द फॉरेस्ट. बट द कंजर्वेशनिस्ट ऑफ कोर्स फॉरगेट that people living within the forests are not actually hampering the development of the forest, but they are an indigenous part. They are a very natural part of the whole forest ecosystem. Okay, so let's see how the amendment goes. But for the time being, these were the provisions of Indian Forest Act 1927, and these are the kind of amendments that the government is trying to bring. That is all for the Indian Forest Act 1927.